Okay, this is started now. You can. Did you all had your day celebrations in your classes today, in your virtual classes? Yes, sir. Children were dressed up as a teacher and they really enjoyed today. Great. I saw some pictures. Some children were dressed up as principal, sir. Principal sir, Roli ma'am. Yeah, yeah, interesting. Okay. All right, we have about 87 participants. Good afternoon and Jai Hind, everybody. And exciting session looking ahead. We have a special surprise towards the end of the program. Just about a minute or so, and then we'll start today. Sir, I'm not able to share with you. So Pritika ma'am is going to send you, sir, my slides. She's going to share it? She's sharing it. So I have to Pritika ma'am. explain a tool also in the middle. So that time I have to share the screen and explain the tool. So can I share the screen and put my video off because I have to explain that tool, and if you will present, I will be unable to like present my tool and things. You go ahead and do the presentation whenever you start, and don't worry about it. If it freezes, then I will take over. Okay, sir. Okay. Good afternoon, Mukul ma'am. Good afternoon, everybody who's joining in. About a minute or so, and we'll start. Good afternoon, Pushpi ma'am. I got a message from Mukesh sir. He'll be joining us a little late today. Special episode today. We have something fun and interesting lined up towards the end. I'm extremely excited and happy to have seen what is there. So I can't keep it in my stomach for a very long time. Okay, so without wasting much time, I think we have about 140 participants. I'm going to ask Shraddha ma'am to come out and present the screen. Shraddha ma'am, Yes, sir. over to you. Good afternoon and Jai Hind, everyone. I am Shraddha Kapoor, class coordinator of Grade 1, Delhi Public School, Varanasi. First of all, I would like to say that I'm really grateful to Revered Director Sir, Honorable Principal Sir, and respected Roli Ma'am for the opportunity to work and grow with this organization. And thanks to all my co-workers for all the love and support so far. Today I am here to present on behalf of Primary Wing. So I will share my screen. So let us start the session with a mindfulness activity. I will invite a bell and you all will close your eyes and concentrate on your breath till you hear the bell again. Mindfulness
is surrender to what is, let go of what was, have faith in what will be. This is the glimpse of my classroom every morning while children are meditating and being mindful about themselves. Through this activity, we are cultivating the seeds of mindfulness in the tiny hearts from a tender age. So here I start with an anecdotal presentation of the best practices followed by primary wing at Delhi Public School, Varanasi. Effective learning. Effective learning environment is one where learners feel involved and responsible for their learning, while being comfortable enough to fully participate in group and individual activities. Keep these points in mind for an effective learning. Students must talk about what they are learning. Yes, one who talks learns the most. Hence, in order to optimize the learning for our little ones, we provide a lot of opportunity for them to talk through different activities, where the screen bubbles with a lot of what, whys, and hows from children's end. Write reflectively about it. Students should be able to reflect on their own learning through different activities, relate it to past experiences, and apply it to their daily lives. So it is truly said that one lots of metacognitive activities form an integral part of an curriculum. Real life connect is the key to concretize all learning and lays a solid foundation of the same. So it is truly said, one thought-provoking question is better than 100 proclamations. Here, I would like to emphasize my learnings through this present way of teaching. It is very exciting for a teacher to use various pedagogical strategies on this platform that instills a sense of achievement when my students are empowered and acknowledged. Real-time formative assessments are conducted and it helps in getting students' reflections and also assesses students' knowledge right at that moment. This has given me the opportunity to expand my knowledge and builds confidence in my abilities. The transformation from brick and mortar to virtual classroom has been a delightful one for me. Technology in education enables children to adjust to their own pace of learning, and it has the power to transform teaching by ushering in a new model of connected teaching. So here I would like to mention the list of requisites for an effective teaching learning process, which we too practice in primary wing. Researchers have proved that the duration of child's concentration span is his or her age plus 5 minutes only. Hence, intermittent addition of physical activities refreshes their mind. Inclusion of surprise elements to the classroom keep their curiosity alive. Each concept introduced through a story makes the learning real-time and long-lasting. Inclusion of live objects helps them to make connections. Assignments beyond the classroom help them to build confidence on their accomplishments. So we give pre and post assignments to the children. Pre assignments we give before we start any concept, and post we give after we complete the concept. No child is left out is the mantra which is achieved through connecting with each one in the virtual space. Being thankful for everything is one important aspect of building positive self and relationships. Including interactive activities ensures 100% students engagement and results in desired learning. So let us take a look at activities conducted in primary wing. Every class starts with an energizer or a story time, and no opportunity is missed for them to express their emotions. And we surprise them with different faces and funny backdrops. These snapshot depicts hands-on activities, which is a true showcase of experiential learning which they endeavor on. Festivals and celebrations build on their social skills and give them a feeling of being a part of bigger picture in this time of physical distancing.
celebrating different days to create awareness on things all round and expand their thinking or horizon. So we have celebrated World's Doctor Day, Uniform Day, International Picnic Day, World Bicycle Day, Environmental Week, Mosquito Day, Healthy Drink Day, Traditional Wear Day, Know About Yourself Week, Community Helpers Day, Community Lunch Day, World Photography Day. And there are few more to go in the list. Funky Hairstyle Day, we are yet to do these activities now. Funky Hairstyle Day, Mix and Match Day, Indoor Bowling Day, Rainwater Harvesting, and to name a few. These are parent ambassadors who come to the virtual online class and contribute to the holistic development of our tiny tots, working hand in hand with the teachers. Trainings, webinars, workshops, and all the CC Fridays have helped teachers in planning different strategies and activities in their lesson plans. So let us take a sneak peek into different activities. So this is how we include STEM lab activities in our curriculum. STEM activities provide hands-on and minds-on lessons for the students. Making math and science both fun and interesting helps the student to do much more than just learn. Also, it lays down the foundation for the future academic success. Draw your imagination. Drawing enables your child's imagination to become more active. Each time they draw, they access their imagination and make physical representations of what's in their mind. Show and tell. It sets the stage for children to become comfortable when speaking in public. This activity helps children in enhancing their interpersonal skills. Show and don't tell. This activity helps children to develop cognitive skills, as here children didn't tell about the character they were portraying. Class has to guess the character depicted by their friends, and once they guess, a child speaks about the character. The class witnessed a lot of excitement during this activity. Scavenger hunt is conducted in the beginning of a lesson for concept building and real life connect. After completion of every lesson, children answer a PS question, problem solving question, which stimulates their higher order thinking. So this is an interactive whiteboard classroom screen for teachers, which is made by the teacher for a teacher with teachers in mind. You will log in through a new tab by typing classroomscreen.com and you will be right there. So after logging in, you will launch your screen. No downloading, no installation, and it is a ready to use tool. It is simply a web tool that is a one-stop shop with useful widgets which can be used while teaching, for conducting games in the classroom, and for behavior management. So we can change the background through this tool. There are multiple tools here. 10 to 12 tools are mentioned here. You can change the background. Also, you can upload the pictures you have saved in the computer from here. Then we have random name picker. Here you can put the class list and you can just go on. Then we have sound level. Sound level is used to check the classroom noise. Then QR code is used to scan the websites. Drawing tool. Drawing tool we can use, and we can change the background here by using maths or English background, English notebook background, or Hindi notebook background. We can change the background and use here, and we can write and explain the children. It is basically a projector for the teacher, can project and write here and can showcase the students. Then we have text box tools. This is a text box tool where you can write sentences. Here you can type and write sentences and you can explain it to the children. Then we have work symbols. For behavior management, you have different work symbols. This is silent, this is whisper, this is talking to your neighbor,
And this is doing collaborative work, working together. So these are different behavior management symbols you can use for your classroom. Then you have traffic lights, stopwatch, timers, clocks, and calendars to acquaint children with the date and the time, and you can play games using stopwatch and the calendar. There is one interesting tool here, a dice. This is a dice which we have used in our classroom, and I will tell you how we have used the dice in assessing the children for orals. So the questions for orals in computer, EVS and maths were divided into 3 groups according to the ability of the children, which was uploaded as a background on the classroom screen. With the help of DICE tool, teachers were able to bring differentiated learning into the classroom without hinting the children. And we successfully did the oral examination through using this classroom screen tool. A very common question which is passed from one generation to another. What do you want to be when you grow? What do you want to be when you grow? Every child is intelligent and each person has a unique interest. MI theory strives to provide educators and parents with a tool to recognize and nurture different abilities of the child. It redefines the word intelligent or smart. It brings in new thinking towards nurturing excellence, creativity, and genius. And it emphasizes that all children can learn, and it is the adults who need to know how to teach them. So keeping this viewpoint in mind, a collaborative effort was taken by primary wing teachers. An activity center was designed by Ishan sir, Richa ma'am, Sarika ma'am, Ekta ma'am, and myself. This was presented as a Friendship Day gift to children for learning by doing in a fun way. So this is the activity center I will be presenting to you. This we have gifted to our children on Friendship Day. This is a home page of the center where we can see different pictures and objects. When we click on any picture or image, it directs us to the activity room related to the picture we have clicked. So suppose I clicked on the picture story for kids and then I reach a story room where we can see many story books and objects with the related story link embedded in it. This is a kitchen activity room with all the links related to the cooking and healthy eating habits embedded in it. This is a STEM lab where if we click on these molecules, we can get to the sites or videos related to different STEM activities. Same way, we have music room, dance room, art room, then craft, jigsaw puzzle room, 7 wonders of the world, karaoke party room, next is flora and fauna, then drag and drop. All the activities related to drag and drop are present here, embedded in the pictures. Story weaver, music room, story weaver, and then all in one activity room where we can check so many different activities, audios and video links, and there are total of 108 links embedded in the entire virtual activity center. This activity center was planned and worked upon so that children can explore and try different activities in their leisure time, sitting at home at their own pace and time. So thank you, sir. With this, I'm done. If any queries, sir, you can ask. That was a fantastic presentation, Shraddha ma'am. And I think everybody, all the primary teachers across the schools have a lot of takeaways. My suggestion to everybody is that you can write to her. And something that stood out for me especially was the activity center and the classroom tool. It was really, the activity center was something that was really, really amazing.
And I think a lot of teachers would be reaching out to you to know more about the activity center. And now I would like to ask Mukesh sir, Pushpi ma'am, Anupama ma'am, if you have anything to add to this or comment on the presentation, please go ahead. Well, commenting on the presentation, I was aware of it. We were privy to it. We did a little session earlier. Yes, I think showcasing a best practices of a particular wing will, bring in a lot of information for the other wings. So going forward, we look forward to a similar best practices sharing. Because as I said, we've already moved from enough of, we've done enough sessions on online tools, and we must move to sharing of best practices. In fact, Shraddha, Roli and I had discussed whether we could open up the activity center to the other two schools. They don't have to go in for, their own activity centers, and just keep on, teachers from each school can keep on adding to the activity rooms. If they wish to have different kind of, they can think more of activity rooms, or in the existing activity rooms, more of activities could also be embedded. So this could be opened up to all the three schools. This is something that I had to share today. Great. Yes, absolutely. Why not? I think if a school has developed a particular resource, it will be in the interest for all of us to share it and add to it. And I think Shraddha ma'am would like to share this with the primary wing teachers. Pushpi ma'am, would you like to, you have any questions you want to talk about the presentation? Yeah, Jain everyone. As Sir has rightly pointed out, the activity center was kind of icing on the cake in today's presentation. Very informative and very innovative. So learners will certainly learn a lot from it. And this also shows the keen interest of the teachers, that the teachers themselves are keen learners. And as teachers, if you want to be alive in the real sense, we should never cease to learn. We should never cease to read. So this one aspect shows that teachers are themselves innovating. They are thinking out of the box. So a good teacher will go on adding value to herself. So it is really a commendable task that NASIC teachers have undertaken. Kudos to all of you, and happy that you are part of the family, and I'm sure the other two schools will gain a lot from your experience. So thank you so much. Thank you, Pushpi ma'am. Yes, anybody else, you have anything, Anupama ma'am, Siddharth, you would like to comment, or you have anything to add to this? Very impressed with the activity center, and I think the classroom is also a good tool for all the pre-primary and primary teachers to use. That's all I have. Okay, great. Anybody has any questions from Shraddha ma'am can put it in the Q&A. Siddharth, you have anything to add to that? All right. Let's move on. Thank you, Shraddha ma'am. Thank you so much for a lovely presentation. We are moving on to our next presenter. Sunita ma'am from NASIC is going to be presenting. Sunita ma'am, do you want me to start the presentation, or? So I'll try. Yeah, I'll do it. All right. Okay. All right. Just a moment. Good evening, everyone. And Jai Hind. I'll just start my presentation, sir. Is it visible, sir? Yes. Yes. Good evening and Jai Hind to everyone. Myself, Sunita Kulkarni. I am the pre-primary educator from DPS NASIC.
Firstly, I would like to give my heartfelt gratitude to respected Director Sir, Principal Ma'am for entrusting me and giving me this opportunity to be the part of this initiative. It has been a long, bumpy ride for all of us as an educator since the outbreak. But CC Fridays has helped us to uplift by sharing our knowledge and making all of us tech savvy. Hope you all agree with this. Firstly, I would like to share with you all our experience on Flipgrid with our little ones on the passion project, that is the Planet Tom. Before assigning this project, we had an orientation session with our parents, wherein parents were explained how to use this Flipgrid and how to send response of their child on Flipgrid. Here is the glimpse of a child response. My name is Tisha Gorochodia. Today I am son. I am a star and sun is my name. I am a star and sun is my name. Center of the solar system what I claim. Bright and golden, shining high. You can see me up in the sky. You can see me up in the sky. A ball of fire, how I am seen. A ball of fire, how I am seen. All planets orbit me, making me supreme. All planets orbit me, making me supreme. Yes, not only our students, but even our parents enthusiastically responded on this Flipgrid project. So we are very thankful to CC Fridays for exposing us to this new app. In spite of riding high on technology, somewhere in our heart, we were missing the hands-on learning tools. So we initiated Tools for Schools, wherein a soft copy of material is sent to the parents at the beginning of every theme. Parents are instructed to take the printouts at the beginning of the class. This ensures us the active participation and involvement of the child in the class. Let me quote here. The child can develop fully by means of experience in his environment. We call such experiences work. To begin with, I would like to share a language material. Working with sandpaper is the base of language, and it's the first step making the child ready for writing. The more the child works with the sandpaper and the flashcard, the more the child develops its visual memory and his muscular memory. Here in this slide, you all can see that the child is working with the tricky word cards. Yes, the parking tricky word activity was being taken up in the class, wherein our children not only just enjoyed, but they even learned the tricky words. Working with movable alphabet is the beginning of self-expression. Children use these aids and learn to read and write at their own pace. Here is the glimpse of a student working on the mod aids. Our students are doing a fantastic job. They are reading fluently.
We strongly believe that children must hold math in their hands before they hold it in their heads. Moving further to our numeracy material, the cards and counters, the tens and ones, individual categories such as units, tens, hundreds, and thousands. Students work with this material in the class and learn at their own comfort zone. They can practice as many times till the concept is clear. This helps us to reach each child and make learning fun for our children. Yes, lifelong enthusiasm for wondrous world around them. Along with the other tools, materials, we also have a culture material. Culture is nothing but the EVS and theme. Theme is being changed every month. Okay, this sensory-based learning tools are designed to provide children with opportunities to discover learning through independence, repetition, and practice. Our children are encouraged to learn about their surroundings, their culture through various activities taken up in the class, through the classified cards, to the nomenclature cards. Many different activities are being taken up in the class. Help of this nomenclature cards and this classified cards. Here are the snapshots of the beautiful journey of our children so far. Here are the image of the material we sent to our parents in a form of a booklet of every month for all the subjects. Yes, if a child cannot learn in the way we teach, we must teach in the way the child can learn. Keeping this in mind, the Little Initiative, Tools for Schools, has shown tremendous impact on our children. It is a delight to see that becoming so confident, independent, and fluent readers at such a young age. We have got amazing results of these tools, and so we really wish to spread this in our DPS family. And before I end my presentation, I would like to thank whole DPS family over here. Last but not the least, I would like to thank my colleagues, Paramjit ma'am, Rafat ma'am, and our COD Pritika ma'am for motivating and supporting me. Thank you, everyone. Thank you, Sunita ma'am. Thank you so much. It was a lovely presentation. So much for all of us to see. So much, sir. The flip grid that the child presented was wonderful, and that's the beauty of the Fridays, that there is just so much sharing, and the real power in the team is within all of us. So the more we share, because each one of us is a hero, and the more we share, the more we get to explore, the more we can give to our children. Your moving alphabet activity was also something that was really, really interesting. I would like to call Anupama ma'am to ask you any question or to comment on the presentation. Anupama ma'am, please. Wonderful presentation, Sunita ma'am. Very like to have videos and that you had video child goal alphabets to make words amazing, and a lot of good work is being done by all of you, and I'm so thankful sharing it here on this form. Thank you so much. Thank you. Thank you, Anupama ma'am.
Anybody has any question, anything to ask Sunita ma'am here? Please, you can raise your hand. I thought I saw somebody had raised their hand. Sushmita ma'am has raised your hand. Do you have anything to ask Sushmita ma'am? Sushmita Singh? You can put it in the chat box or the Q&A. Mukesh sir, what did you think about using, moving alphabets and about the presentation? Well, any animated work with the children works. So, they love animation. So an animated alphabet will really bring in a lot of joy to the kids. It was an amazing activity that she's done. Right. Thank you. Thank you. Yes. And I think giving more power in the hands of the children for them to explore is something that we should all aim for. And your sandpaper activity, wherein they are developing muscle memory and they get to explore. I mean, just the sheer confidence that the child gets when he's able to do very, very small things. And that's what we should build our curriculum on for the very pre-primary students. So a great presentation, Sunita ma'am. Fantastic work happening at Nasik, as Anupama ma'am pointed out. And Pushpi ma'am, anything you would like to add here or speak? Please go ahead. Yeah, we could go ahead, sir. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Sunita ma'am. We have our last presenter from Nagpur, Neelam Soni ma'am. Over to you, Neelam ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Please go ahead. आदरणीय गणमान्य सदस्यों, डीपीएस परिवार के सभी शिक्षकों को मेरा सप्रेम अभिवादन। सीसी फ्राइडे के इस अकल्पनीय मंच पर मुझे अवसर देने के लिए आप सभी का सहृदय आभार। सामग्री आधारित विस्तारित शिक्षण। सामग्री आधारित विस्तारित शिक्षा क्या है और कैसे मैं अपनी कक्षाओं में इसका प्रयोग करती हूँ, इस पर मैं बात करूंगी। किताबों से होते हुए वास्तविक संसार की यात्रा। जुम्पा लाहिरी के प्रेरक सुविचार से हम आगे बढ़ते हैं। किताबों में वे चीजें हैं जिनकी मदद से आप बिना पांव चलाए ही यात्रा पर निकल जाते हैं। तो आइए दिमागी कसरत के लिए तैयार हो जाइए और मेरी इस पहेली का जवाब दीजिए। बूझो तो जाने। आप अपने जवाब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। एक किले के दो ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, खत्म हो जाए उनका संसार। आपको इस पहेली का उत्तर बताना है। देखते हैं कौन बताता है जल्दी से इस पहेली का उत्तर। एक किले के दो ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, खत्म हो जाए उनका संसार। सर आप मुझे उत्तर बता दीजिएगा क्योंकि मुझे चैट बॉक्स में मैम बहुत सारे लोगों ने लिखा है माचिस की डिबिया। जी 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 बिल्कुल सही है सर। आप सभी का धन्यवाद उत्तर बताने के लिए। तो आगे चलते हैं हम। चित्र आपको दिख रहे हैं मेंढक के। तो एक छोटी सी लघु कथा मैं आपको बताऊंगी, उससे शुरुआत करूंगी। प्रेरक लघु कथा है। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंभा वहां के राजा ने लगवाया था। एक दिन तालाब के मेंढकों ने निश्चय किया कि क्यों ना इस खंभे पर चढ़ने की रेस लगाई जाए। जो भी चढ़ जाएगा उसे प्रतियोगिता का विजेता मान लिया जाएगा। सब कुछ तय होने पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तथा प्रतियोगिता देखने के लिए कई मेंढक एकत्रित हुए। खेल आरंभ हुआ।
चारों ओर शोर ही शोर था। उस लोहे के खंभे को देखकर सभी कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना नामुमकिन है, इसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। सभी लगातार हार मानते गए। मेंढक प्रयास कर रहे थे, पर पास जमा मेंढक कह रहे थे कि किसी का भी ऊपर चढ़ना असंभव है। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा सा मेंढक लगातार कोशिश करता रहा और खंभे पर चढ़ गया। उसे विजेता घोषित किया गया। सबने उसकी सफलता का राज जानना चाहा। सभी विजेता मेंढक ने बताया कि मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता। जब आप सभी चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा आप मुझसे कह रहे हो कि तुम यह कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए मुमकिन है। इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई और मुझे देखकर बाकी मेंढक भी लगातार प्रयास करते रहे। सीख, राजा ने खंभा लगाकर मेंढकों को प्रतियोगिता का अवसर प्रदान किया। हमें भी अपनी कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। बच्चों को नकारात्मक भाव को सकारात्मकता में बदलने की सीख देना चाहिए तथा उन्हें यह बताना चाहिए कि हम सभी के अंदर सफलता पाने की क्षमता है। हम केवल सीढ़ियां हैं, ऊपर आपको स्वयं चढ़ना है। सामग्री आधारित विस्तारित शिक्षण का भाषा में महत्व। हिंदी भाषा के प्रति लोगों का यह मत है कि यह बहुत उबाऊ होती है। बच्चों को व्याकरण, मात्राओं की अल्प जानकारी होती है और उनसे गलतियां भी अधिक होती है, इसलिए वे इससे कतराते हैं। परंतु किसी भी विषयांश को समझाने से पहले यदि उस विषयांश पर, उस टॉपिक पर आधारित एक्टिविटी ले ली जाए तो बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं और उनका डर भी समाप्त हो जाता है। शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। शिक्षण सामग्री को ध्यान में रखकर गतिविधि आधारित अधिगम छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति है, जो बच्चों की इंद्रियों को उत्तेजित कर अर्जित ज्ञान के आधार पर व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करती है। इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों को विविध परंतु जीवंत अनुभव प्रदान करना है। वर्णमाला पर आधारित कक्षा 5वीं की ये गतिविधि है जो मैंने ली थी। वर्णमाला हिंदी व्याकरण का वह अंग है जो प्राइमरी कक्षा से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक पूछा जाता है और बच्चों से लेकर उनके अभिभावकों तक की हर बार यही समस्या होती है, शिकायत होती है कि उनके बच्चों को मात्राएं नहीं आती। तो ये मात्रा पर आधारित मैंने एक गतिविधि ली थी, चार्ट उनसे बनवाया था, जिसमें स्वर और व्यंजन को वो किस तरह से सीख सकते हैं, उसका उच्चारण कैसे कर सकते हैं। आगे थोड़ी कुछ झलकियां और दिखाऊंगी। यदि छोटी कक्षाओं में ही जैसे अंग्रेजी भाषा के वर्ण फोनिक्स की सहायता से सिखाए जाते हैं, हम छोटी कक्षाओं में सीखते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ब। उसी प्रकार यदि हिंदी को भी ध्वनि की सहायता से, फोनिक्स की सहायता से सिखाई जाए तो बच्चे उसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसके लिए एक छोटी सी गतिविधि आप मेरे साथ कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को आप अपने पेट पर यहाँ पर ऐसे बंद करके आप रख सकते हैं और लघु स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों का उच्चारण करके आप देख सकते हैं कि छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, सभी को इसी में समस्याएं होती है कि हमें तो इसका पता ही नहीं है कि कहाँ कैसी मात्राएं लगाना है। तो अगर आप इस तरह से हाथ रखते हैं और उच्चारण करते हैं, छोटे ह्रस्व स्वरों का उच्चारण कीजिए, अ, ई, उ, री। अब दीर्घ स्वरों का उच्चारण कीजिए, आ, ई, उ,
ए, ओ, औ। आप जब ह्रस्व स्वरों का उच्चारण कर रहे थे, छोटे स्वरों का उच्चारण कर रहे थे, शॉर्ट वॉवेल्स जब आप उच्चारण कर रहे थे, तो समय भी कम लगा, शक्ति भी कम लगी। जब आप ई कह रहे थे तो सांस रुक जाती है, पेट अंदर जाता है। यह गतिविधि द्वारा आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जब आप बड़ी ई का उच्चारण करें, ई, सांस रुकती नहीं है और उच्चारण भी लंबा होता है। तो ये बात हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं और इसमें वो बड़े ही उन्हें आनंद आता है। तो अन्य वर्ण भी उच्चारण में लगने वाला समय, शक्ति, उच्चारण स्थान आदि की सहायता से हम वर्णमाला बच्चों को सिखा सकते हैं। और जब कोई भी अभिभावक यह प्रश्न करते हैं कि उनके बच्चों को इसमें समस्या है, तो उन्हें आप ये जरूर बताइए कि वर्णमाला का चार्ट आप अपने कमरे में लगाइए और 1 मिनट का 1.5 मिनट का समय लगता है। नियमित उसका अगर अभ्यास करें, 2-2 शब्दों का यदि उसका अभ्यास करें, तो मात्रा संबंधी जो त्रुटियां हैं वो नहीं होती है। सामग्री आधारित विस्तारित अध्ययन के लाभ। आनंद की अनुभूति होती है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं क्लास को। शारीरिक एवं मानसिक तत्परता उनमें बनी होती है, क्रियाशील होते हैं। प्रोत्साहन, यदि हम बच्चों को किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित करें तो प्रेम पूर्वक वो अपना कार्य पूरा करते हैं। विषय के प्रति जिज्ञासा निर्माण होती है, जिज्ञासा उनको उत्सुकता होती है कि विषयांश में क्या बताया गया है, क्या दिया गया है। नई सोच निर्मित होती है। गहन अध्ययन, विकसित शब्दावली, अवधारणाएं, किताबों को पढ़ने के प्रति रुझान, जीवन कौशल निर्मित होता है। गहन अध्ययन, वो गहराई से अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, उनकी शब्दावली जो है वो विकसित होती है, बहुत सारे शब्द सीखते हैं। कंसेप्ट जो है विषय की वो क्लियर होती है और बहुत सारी किताबों को पढ़ने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, उनमें उत्सुकता जागृत होती है। लाइफ स्किल्स डेवलप होती है, उसका भी निर्माण होता है। स्वयं के अनुभव से सीखना, छात्रों में आलोचनात्मक सोच का निर्माण होना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसी पर टीका टिप्पणी करना, ये सभी बातें बच्चे खुद के अनुभव से सीखते हैं। बच्चों को वास्तविक जीवन की प्रासंगिकता को समझने में मदद मिलती है। वास्तविक जीवन क्या है, वास्तव में क्या होना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, हम किस तरह से कार्य को कर सकते हैं, ये सभी बच्चे खुद सीखते हैं। बच्चे खुद को प्रकृति, वस्तुओं, परिसर आदि के माध्यम से व्यक्त करते हैं। स्वशिक्षण कौशल निर्मित होता है। विषय एवं सह पाठ्यक्रम विषयों को समझने में सहायक होती है, सहायता मिलती है। चित्रों के माध्यम से लघु कथा वर्णन। कहानी विधा पर आधारित लघु कथा का वर्णन कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों ने किया, जिसमें उन्होंने विविध चित्रों का उपयोग किया कहानी बताने के लिए और नैतिक शिक्षा पर आधारित ये कहानी थी। तो सभी बच्चों ने कहानियां, बहुत सारी कहानियां पढ़ी, अच्छी कहानियां ढूंढी और उसके बाद उसको प्रदर्शित किया। सबने अलग अलग कथा का सार, कथा की नैतिक शिक्षा, ये सभी कुछ हमें बताया। विज्ञापन लेखन एवं उसका प्रदर्शन कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों ने किया। विज्ञापन रचनात्मक लेखनों की जानकारी, साहित्य की विधा की जानकारी जो रचनात्मक रूप से बच्चे प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षार्थी को विषयांश की जानकारी रचनात्मक रूप से देना। पहेली और खेल, हम किस तरह से अपने विषय को और आकर्षक बना सकते हैं। कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम अलग अलग चीजें उनसे पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। पहेली और खेल, विज्ञापन, नारा, नाटक, कठपुतली, अभिनय, वाद विवाद, आपसी संवाद, साक्षात्कार, कविता निर्माण द्वारा विषयांश को रोचक बनाया जा सकता है। व्याकरण की जानकारी आपसी बातचीत, प्रकृति, जीवनावश्यक वस्तुओं की सहायता से दी जा सकती है। अगर व्याकरण पढ़ाना है तो जरूरी नहीं कि हम बच्चों को बंद कक्षा में, अभी तो माहौल नहीं है बाहर जाने का, परंतु हम उन्हें बगीचे में भी ले जाके बता सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हम उन्हें आसपास की वस्तुओं से और जो भी साधन उपलब्ध है प्रकृति, उसके माध्यम से भी समझा सकते हैं। फ्लिपग्रिड की सहायता से बच्चों ने कविता गायन किया, अपना ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की और हमसे
साझा किए। स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस कक्षा 8वीं। कक्षा 8वीं और 9वीं के विद्यार्थियों ने स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी रचनात्मक कौशल्य का प्रदर्शन किया। हमारी सोच से बढ़कर उन्होंने यह कार्य किया, जिससे हम सभी चकित हो गए। बच्चों ने विषयांश पर स्वनिर्मित कॉमिक्स और वीडियो आदि का प्रस्तुतिकरण किया। इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों में सृजनात्मक रूप से पठन, लेखन, श्रवण, प्रस्तुतिकरण आदि को बढ़ावा देना था तथा उन्हें साहित्य विधा की सुंदरता का एहसास कराना था। एसएलसी नाटक द्वारा कथा का प्रस्तुतिकरण किया। इसमें भी बच्चों ने वीडियोस बनाए। कविता पर आधारित ये उन्होंने कविता थी, उस पर आधारित ये वीडियो बनाया उन्होंने। घर के बुजुर्गों के प्रति प्रेम सम्मान की अभिव्यक्ति पैडलेट द्वारा कक्षा 7वीं, कक्षा 9वीं ने भी की। कक्षा 7वीं ने भी पैडलेट पर कार्य किया है, 9वीं ने भी रचनात्मक लेखन किया है और एसएलसी के द्वारा बच्चों कक्षा 9वीं के बच्चों ने भी अब जो सिखाए हुए पाठ थे उस पर आधारित प्रदर्शन किया। जब आप खुद से सवाल करने लगेंगे तब आप अपने आप सीखने की कोशिश करेंगे। कंटेंट से आगे बढ़कर आउटकम्स पर ध्यान देना और क्वालिटी पर फोकस करना एवं अपनी ओरिजिनलिटी को बनाए रखते हुए बच्चों को रिसर्च के लिए प्रेरित करना, यही हम सभी का उद्देश्य है। गूगल के ऑनलाइन शिक्षण टूल्स ने भाषा को और अधिक रोचक बनाया है। गूगल इनपुट टूल्स, गूगल फोनिक्स, गूगल इंडिक, इसके द्वारा बच्चे आसानी से हिंदी टाइपिंग भी कर रहे हैं। साथ ही नियरपॉड, कहूट, क्विजेस, मेंटीमीटर, बुक विजेट्स, फ्लिपग्रिड, पैडलेट इत्यादि शैक्षिक टूल्स की सहायता से ऑनलाइन शिक्षण को प्रभावी बनाने में हम सभी को सहायता मिली। मेरी कलम से चंद पंक्तियां। मानो खुली किताब हो बच्चा, हर शब्द इसमें हर भाव है सच्चा। मुस्कुराकर इन्हें देख लो, इन मोतियों को सहेज लो। पास हमें बुलाते हैं, मानो बचपन में पहुंचाते हैं। भूल चुके हम गुड्डे गुड़ियां पुरानी, याद दिलाते ये दादी नानी की कहानी। चाहे हमसे इतना ही, चाहे हमसे इतना ही, यदि ना बात समझ मुझे आपकी आई, यदि ना बात समझ मुझे आपकी आई, तो क्या मेरी समझ अनुसार करवाओगे पढ़ाई? धन्य धन्य मैं हो जाऊंगा, सचमुच आप जैसा बन पाऊंगा। आप हैं गुरुजन सर्वस्व मेरे, मैं सदा शीश नवाऊंगा, मैं सदा शीश नवाऊंगा। शिक्षा निरंतर चलती रहती है। जितना हम बच्चों को सिखाते हैं उतना ही वे भी हमें रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। आदरणीय डायरेक्टर सर, तीनों स्कूलों के प्रिंसिपल्स, आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन से चलाए जा रहे सीसी कार्यक्रम, यहाँ हम सभी को यहाँ से ऑनलाइन शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा सहायता मिली है, बहुत सारी जानकारी मिली है और कक्षा अध्यापन सुलभ हुआ है। इसलिए हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। अंत में मुझे सदा और हम सभी को सदा प्रेरित करने के लिए सुश्री अनुपमा मैडम, राजश्री वैद्य मैडम, आरती पाठक मैडम, विशेष उन्होंने सहयोग दिया है मुझे, और आप सभी शिक्षकों का, सहयोगी शिक्षकों का मैं आभार मानती हूँ। आप सभी का सहृदय धन्यवाद। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं neelam.soni@dpsnagpurcity.com पर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन था आपका और आपने तो टीचर्स डे का टोन पूरा सेट कर दिया इस प्रेजेंटेशन से, क्योंकि यू टुक अस बैक फ्रॉम what we are here for as teachers,
और आपके presentation में the one thing that stood out for me, and that is something that I want to talk to everybody, is about all your presentations were about student expression. You are giving your classes more and more on the student side to express themselves, whether it is through a story narration, या आप उनको अगर व्याकरण भी सिखा रहे हैं तो बच्चों से ही आप उनसे एक्टिविटी करा करके. So children are getting a lot of time, a lot of modes to express themselves, and in the online as well as in the offline mode, student expression and student participation is the way forward. If we really want children to learn, they must experience the learning that is happening. And I think your presentation talked about that in detail. Very motivating story that was there. And overall, I'm extremely happy with all the points that you have touched upon. Thank you so much. I think Mukesh sir has something to add here. Over to you. Not to add, but I really was impressed with the way she has, presented it. So I thought, ma'am, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, दुरुस्त नहीं है. हम ऐसे मद्रासी हैं वैसे. लेकिन अगर आपकी तरह टीचर होती मेरी, क्योंकि मैंने शायद 1980 में हिंदी सीखना शुरू किया था, जब मेरे बच्चों को मैंने हिंदी माध्यम स्कूल में डाला था इनिशियल इयर्स में. मेरी बेटी एक्चुअली जब दिल्ली में पढ़ रही थी तो वो हिंदी माध्यम वाली स्कूल थी फर्स्ट 5 इयर्स. तो उनको पढ़ाने के लिए मैंने भी हिंदी सीखी. हमारी हिंदी बेसिकली बॉलीवुड और उसी तरह सीमित थी. आपके नाम में न केवल धन है, नीलम और सोनी, लेकिन आप कलम की भी धनी है, स्वर की भी धनी है, और एक एक्सपीरियंशियल एग्जाम्पल के थ्रू आपने जो छोटी और बड़ी ई की मात्रा या छोटा और बड़े स्वर की जैसे सिखाने की आपने आज कोशिश की. आई एम श्योर यू आर डूइंग इट इन दी क्लासेस. दैट वाज द बेस्ट थिंग, बिकॉज ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है बच्चों को हिंदी जब वो सीखते हैं तो. और एक बात बहुत विडंबनाजनक है कि देश में, अपने देश में कर्टन के पीछे, मैं पर्दा नहीं यूज कर रहा हूं, मैं कर्टन शब्द यूज कर रहा हूं डेलिबरेटली, कर्टन के पीछे अपनी ही भाषाएं छुप गई हैं. और अच्छी बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, इट इज टॉकिंग अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म, इट इज टॉकिंग अबाउट मदर टंग, एंड आई होप ऑल दी अपवर्ड मोबाइल फैमिलीज जो हैं वो हिंदी के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा डेवलप करे जितनी वो लोग अंग्रेजी के लिए है. क्योंकि हिंदी शायद एक ऐसी भाषा है, अनलाइक इंग्लिश, जैसे वो बोली जाती है वैसे ही वो लिखी जाती है. इसके अंदर जो बेसिक स्किल्स है कोई भी भाषा सीखने की, कि LSRW जो हम कहते हैं हमेशा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, it is so beautiful. It can be so beautifully done in any of the Indian languages, including Sanskrit. So more power to the Hindi teachers, and I think all Hindi teachers across the schools have, बहुत ये benefit है आज का आपके presentation का. So आपको बधाई और धन्यवाद for that wonderful presentation. Thank you, sir. Thank you, Neelam. Thank you so much. Okay, so we're moving on, and as I said, there would be a surprise element towards the end. Before that, just if anybody would like to add or speak anything, please go ahead. Please unmute yourself and go ahead from the panelists. Anybody would like to go first? All right. Can we have? So before I play this, so I'm going to say a big thank you to Vinesh for coordinating from the 3 schools and coming out with this brilliant video. And a big thank you to all the music, arts, dance teachers from all the 3 schools. And a very happy Teachers Day to everyone. So should I start this video? Yeah, go ahead. धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी भी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा.
समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे क्या डरना जी। दोस्तों, हमारा ये गीत उन सभी टीचर्स के लिए है जिन्होंने इतनी रुकावटों के बाद भी अपनी शिक्षा का दिया सदा जलाए रखा। उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा। जिद है मुस्कुराएंगे, खुश रहने का है वादा। उम्मीद वाली सनशाइन वाली आशा। तुम दिल से अगर पूछोगे वो खुश रहना ही चाहे, जब सच्चे मन से मांगो तो खुल जाती है राहें। तो खुल के खुशी लुटाओ, ये क्या है आदा। उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा। सनी धनी सा गरे सनी रे सनी द सनी द पनी द प म द प म ग म प म ग म ग रे सा। नि सा रे सनी सा रे सनी सा रे ग रे सनी सा। नि सा रे सनी सा रे सनी सा रे म रे सनी सा। सनी सा रे द प ग म प। नि सा रे ग रे सनी सा। सनी सा रे द प ग म प। नि सा रे ग रे सनी सा। नि नि सा सा रे ग रे सा। नि नि सा सा रे ग रे सा। नि नि सा सा नि नि सा सा नि नि सा सा नि नि सा सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि। दिल धीरे धीरे धड़के आज होने को है आगाज, सफर पे चलने का बढ़ने का। कितना है हौसला उतना ही फासला, मंजिल पे मिल ही जाना है। ओ ख्वाब से आगे जाना है। हमसे तो उम्मीदें हैं, हमसे तो दिलासा है, हमी पे है निगाहें भी, हमी पे तो भरोसा है। हम में है हीरो, हम में है हीरो, हम में है हीरो, हम में है हीरो। दिल से कहो है, हम में है हीरो। दिल से कहो है, हम में है हीरो, हम में है हीरो। That was just brilliant. A big, big, big thank you to all the music, dance, art teachers for putting this together, and wishing everybody, all the heroes of DPS, a very, very happy Teachers' Day in advance. Siddharth, would you like to say something? Yeah, so wishing everyone a very happy Teachers' Day. Like you rightly said, all the heroes of the DPS family. You guys are all that is actually making the difference out there. I think me, Bhaiya, all of us are just there to help you, support you. But actually, the person who's making the difference uh, actually is all of you, the teachers. And I really enjoyed one of the quotes that was shared by Sunita ma'am today,
that if the child is not learning the way you teach, maybe you teach the way the child wants to learn. So on that, a very happy Teachers Day to everyone. Thank you everybody.